we thought it as a religious component. Remember, friends, religion is something which is personal. It has its own agenda. It had a discipline rules. But basically, spiritual component is a universal component. And we need to show to the world that we need to develop a positive mindset. Positive mindset, I tell you. If you try to have a destructive mind, this is what you are experiencing today. And now we have a duty as the student leaders or the political leaders or whosoever may be the leading the whole nation or the country, the whole world, because it has been said by India, Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. Universally, it has been stated that the entire universe is a manifestation of pure intelligence and pure consciousness. These are the most scientific principles which were enunciated by the great philosophers saints of India like Sant Dhaneshwar and Sant Tukaram, but which were confused for so many reasons. And now is the time, as was said by Honorable Vice President of India, Venkaiah Naidu Sahab, on the occasion of this inauguration. He said that time that this will become eighth or the ninth wonder of the whole world, not because it is the biggest, because it conveys a very important message. And tomorrow this will emerge as a spiritually oriented laboratory, and this will become a pilgrim center of the whole world to understand and learn what we are and what is our duty. Religion as a duty. Duty toward the mother, the father, the family, the society, the nation, the whole world. This is what India stands for, and this is what that Vishwaguru word really reflects and gives a very wonderful, unique message of very scientific, logical, philosophical, and spiritually oriented. This would be the duty of all your leaders, friends. Remember, whatever branch you study, either in the School of Government or any other School of Economics or any other sciences, please remember we have to have a duty now towards tomorrow, because the whole world is waiting somebody to show the pathway. Somebody to realize, you may believe it or not, but possibly this will be the need of the hour. And this is what India and the Indian culture, tradition and philosophy, which is a spiritually oriented philosophy, but very scientific and logical. I pray, once again, I say thank you so much, Honorable Governor, sir, Your Excellency, for sparing your valuable time, and all other my learned guests too today. And thank you, friends. Best of luck to you. Thank you. Thank you, sir, for those words of wisdom. Namaste. Namaste, sir. Namaste. Our chief guest for the day, Shri Bandaru Dattatreya ji. He is known as the People's Leader in Telangana and is currently serving as the Governor of Himachal Pradesh. He served as the member of Lok Sabha for 4 terms representing the Bharatiya Janata Party. He was also a Minister of State for Urban Development and Railways way back in 1999. He is credited with bringing the multimodal transport system to Hyderabad. I request my technical team to play a small film on our chief guest, Shri Bandaru Dattatreya ji. Shri Bandaru Dattatreya, known as the People's Leader in Telangana, is currently serving as the Governor of Himachal Pradesh. He served as the member of Lok Sabha for 4 terms representing the Bharatiya Janata Party. He holds a BSc degree from Osmania University, Hyderabad. He started social activism in 1965 when he joined the Rashtriya Swayamsevak Sangh and was also imprisoned during the emergency. In 1980, he joined the BJP and soon rose up the ranks to become the General Secretary of Andhra Pradesh BJP. In 1991, he was elected to the Lok Sabha from Secunderabad constituency for the first time. In 1997, he was appointed as the state president for the BJP Andhra Pradesh unit. In 1998, he was re-elected to the Lok Sabha and served as Union Minister of State for Urban Development in the second Vajpayee ministry. He was elected for a 3rd consecutive time in 1999 and went on to serve as Minister of State for Urban Development and Railways. He is credited with bringing the multimodal transport system to Hyderabad. The party appointed him as National Vice President in 2013. During the Telangana movement,
he started the Alai Bhalai program, where leaders from all political parties rubbed shoulders. In 2014, he was re-elected to the Lok Sabha from Secunderabad constituency and became a Minister of State for Labour and Employment in the Modi ministry. In 2019, he was appointed as the Governor of Himachal Pradesh. Shri Bandaru Dattatreya is also an adherent social worker and has concentrated his efforts towards slum development, especially through house building and supply of potable water. He is also the president of Samskar Bharatiya Cultural Organization, Andhra Pradesh, and founder of the Seva Bharatiya Slum Development Organization. We are honored to welcome Shri Bandaru Dattatreya. I now request Honorable Governor of Himachal Pradesh, Shri Bandaru Dattatreya ji, to address this august gathering. Over to you, sir. बहुत खुशी है आज मैंने एक नए जो है आज राहुल खराड़ जी मैं और विश्वनाथ जी डॉक्टर विश्वनाथ जी खराड़ और रितेश पांडे जी दिनेश गुंडराव जी और मैं तेलुगु ब्रदर फ्रेंड डॉक्टर एन.टी. राव and remaining all other delegates. सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अभी आज मैं तो समझ सकता हूँ कि राजनीति को स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे खुशी है MIT ने यह नोबल प्रयास को जो है आप लोग एक अच्छे क्वालिटी के रूप में पॉलिटिशियन तैयार करने हैं, कैसे तैयार पॉलिटिशियन होना चाहिए, इसके लिए जो है आप राजनीति में आने के लिए नए पीढ़ी को, यंगर जनरेशन को सभी उनको तैयार करने में, प्रशिक्षण देने में, सभी विचारों को आदान प्रदान करने में उन लोगों को आप लोग जो शिक्षण दे रहे वो बहुत ही प्रेरणादायक है, वो प्रेरणादायक है। और मैं इस आपके राष्ट्र सेवा के लिए मैं आप सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे और भी खुशी है कि MIT जो है ये भारतीय छात्र संसद ये जो है राजनीतिक विषयों के लिए कोचिंग देने के लिए 10,000 विद्यार्थियों को, वो भी 18 साल से लेके 25 साल तक उम्र वाले जो यंग लोग हैं उनको जो है काफ़ी अच्छा MIT उनको अच्छे जो है एक अच्छे हब के रूप में अच्छे स्कॉलर्स को तैयार करने के लिए और साइंटिफिक टेम्पर और साथ ही साथ इंडियन कल्चर और वैसे ही हमारे भारतीय मूल्यों को भी आप लोग प्रमोट करने के लिए इस यूनिवर्सिटी जो प्रयास चल रहा है बहुत ही जो है सराहनीय है। मुझे बहुत खुशी लगा है
विशेष करके हमारे जो विश्वनाथ जी ने बताया था, विश्वनाथ जी ने जो बताया था, बहुत ही जो है मुझे आनंद लगा है। यानी किस विचार से, किस परिस्थिति में आप लोग इस इंस्टीट्यूशन को तैयार कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और इस संदर्भ में जनरली राजनीति में आने के लिए नए लोग डरते हैं। राजनीति बोले तो एक कीचड़ है, राजनीति बोले तो ये हमारे लिए नहीं है। जो आदमी किसी भी तरह के काम को नहीं आता है, वैसे लोग राजनीति में जाए। डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, बड़े इंडस्ट्रिस्ट है, बड़े स्पोर्ट्समैन है, ये सब लोग वो बनना चाहते हैं। लेकिन किसी को राजनीति, किसी को पूछता हूँ मैं बहुत से फंक्शनों में जाता हूँ, बच्चों को पूछता हूँ क्या बनेंगे, तो वो बनेगा मैं मिलिट्री बनेगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, लेकिन लीडर बनूंगा ऐसा नहीं कहेगा। इसलिए लीडर का जो परसेप्शन है, नेता बोले तो उसके बारे में जो धारणा बनी है वो बहुत जो है उतना जो है हम सोच नहीं सकते। तो इसके लिए जो है हमारे आज़ादी के पहले जो राजनीति था, वो राजनीति जो है देशभक्ति का था। देशभक्ति से हम देश को स्वतंत्रता करना चाहिए, और उसमें हमारे जो भी आदर्श, महात्मा गांधी जी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वैसे ही जो है लाजपत राय, तिलक, वैसे ही हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, ऐसे लोग जो है समर्पित भाव से, समर्पणा के साथ वो लोग जो है बलिदान किया है। लेकिन आज़ादी आ गई। आज़ादी आने के बाद लोगों का कुछ जो है तरीके बदल गए। राजनीति ये जो है एक व्यापार है। पॉलिटिक्स इज ए प्रोफेशन। लेकिन मैं समझता हूँ नई पीढ़ी के लिए समझने के लिए पॉलिटिक्स नॉट ए प्रोफेशन, इट इज नॉट ए कमीशन, इट इज ए मिशन। ये जो है एक संकल्प होना चाहिए, ये मिशन बनना चाहिए। और वैसे ही जो अभी विश्वनाथ जी ने बताया था, राजनीति जो है मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स, विदाउट वैल्यूज man has no value. Without morality there is no quality. However you may be big. तो इसलिए जो है हमारा राजनीति हमको वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। वो वैल्यू बेस्ड में भी क्या, हमारा विचार, आचार, व्यवहार, हमारा विचार भारतीय मूल्यों का रहना चाहिए। भारतीय हमारे पुराने जो है संस्कृति, भारतीय संस्कृति है, भारतीय विचारधारा है,
उसकी मान्यता होना चाहिए। ऐसा नहीं है दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको हम आंख मूंद कर देखेंगे, ऐसा नहीं। हमारे वेदों में कहा गया है, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स। तो इसलिए हमारा विचार जो है बहुत ब्रॉड होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। और साथ ही साथ भारतीय मूल्य और भारतीय हमारे विज्ञान, हमारा विज्ञान भी जो है बहुत बड़ी है। और हमारा भारत का जो है दुनिया को देने वाला कोई भी अगर महत्व विषय अगर है दुनिया को, वो जो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज फॉर मैनकाइंड। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट a religion. Spirituality is not at all a religion. Religion is only one way of life. But spirituality has got divinity. Divinity होनी चाहिए, दैवत्व होना चाहिए। और हम जो है मानव से माधव बनना चाहिए, हम मानव से राक्षस नहीं होना चाहिए। समाज की सेवा भावना होना चाहिए। मेरा जो भी ज्ञान है, मेरा जो भी टेक्नोलॉजी है, मेरा जो भी बड़ापन है, ये समाज के लिए करूँगा, ये समाज के लिए मैं अर्पण रहूँगा। ऐसी भावना से राजनीति में आना चाहिए। राजनीति ऐसा नहीं है, ठीक है एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने, वो जो है समाज के हित के लिए बने, केवल अधिकार के लिए, केवल और पॉलिटिक्स के लिए राजनीति नहीं चाहिए। राजनीति जो है महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा, आपका जो भी गोल है उसको आप प्राप्त करने के लिए आपके जो साधन भी है, आपके साधन भी जो है उतने पवित्र होना चाहिए। केवल बड़े बड़े विचार रहता है, लेकिन वो आदमी को हम देखेंगे वो विचार उसमें आचार में नहीं आता। जैसे कैस्टिज्म है, बड़ा आदमी बनता है, फिर भी जो है वो कैस्टिज्म के आधार पर जाता है। कोई केवल प्रांतीयता के आधार पर जाता है। ठीक है, हमारे रीजनल डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे प्रांतीयता की हम आइडेंटिटी रखना चाहिए, लेकिन उसके माध्यम से हम हमारा स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए, वैसे ही जो है आज हमारे काफ़ी विषय जो है आप लोगों ने विचार किया, और आज ये खुशी भी है, आज 76th एनिवर्सरी ऑफ राजीव गांधी, लेट प्राइम मिनिस्टर। वो भी नाम लगाया गया सद्भावना दिवस। सद्भावना होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। समाज के भीतर जो है सभी लोगों को जुड़ाने का होना चाहिए, विघटन करने का नहीं होना चाहिए, डिविसिव फोर्सेस नहीं बनना चाहिए। तो इस विचार को जो है हम आगे बढ़ाना चाहिए। और वैसे ही और एक विषय पर भी जो है हम ज़्यादा हमारा राजनीतिक में क्षेत्र में जाने के बाद खिलाफ के लिए खिलाफ करना ठीक नहीं। खिलाफ के लिए खिलाफ करना ठीक नहीं। मैंने पहले ही कहा था, हमारा देश जो है एक
विविधता में एकता है, डिफरेंट रीजन रिलीजन है, डिफरेंट कल्चर्स है, फिर भी जो है हमारा देश एक है। जैसा अभी कोविड-19 में देखिए अपन कितने जो है सेवा संस्थाएं आ गए, स्वच्छंद से जो है ह्यूमन वैल्यूज, गरीब आदमी भी जो है अपने रोजगार से बचाकर उन्होंने गरीब को सेवा किया है। ये भावना बहुत बड़ी है। ऐसी परिस्थिति में भी हम लोग इसको पॉजिटिव माइंड से सोचना, राजनीति कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, शुड बी पॉजिटिव आउटलुक। और पॉजिटिव में डेवलपमेंट होता है, पॉजिटिव से हमारा समाज निर्माण होता है। समाज निर्माण करना बहुत बड़ी काम है, समाज को विघटन करना बहुत छोटी समय में हो जा सकता है। तो इसलिए डिविसिव फोर्सेस, ऐसे शक्तियों को भी जो है हम राजनीतिक प्रेरित नहीं होना चाहिए, राजनीतिक नेगेटिव थिंकिंग नहीं रहना चाहिए। और वैसे ही जो है हम कभी भी कमिटमेंट, राजनीतिक नेता, मैं पहले ही कहा था, जैसे स्वतंत्रता में एक कमिटमेंट के साथ तो लोगों ने बलिदान किया है, वैसे ही आज समाज के लिए गरीब से गरीब आदमी को हम बराबर सेवा करेंगे। और वैसे ही जो भी भ्रष्टाचार है और राजनीतिक नेता पारदर्शी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। लोग देखते ही कहना चाहिए कि ये जो है हमारा लीडर है। तो इसलिए लीडर एक महत्व विषय है, उसको हम लोग फिर से जो है महात्मा गांधी जी, मैंने जो पहले बताया था, वैसे हम देश का लीडरशिप को जो है आगे लाने के लिए नई पीढ़ी बहुत आगे आना है। नई पीढ़ी जितना आगे आएंगे उतना जो है हमारा ये भी जो है अभी पॉलिटिक्स शुड बी डेवलपमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, डेवलपमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए। एक लक्ष्य लगाकर हम लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम उसको आगे बढ़ाना चाहिए, जितना डेवलपमेंट होगा। और वो डेवलपमेंट में हमारे गरीब से गरीब आदमी किसी वर्ग का भी हो, उसको हम लोग प्राथमिकता देना चाहिए। उसमें पहला एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट, ये 3 बातों पर हम नए इनिशिएटिव्स को, नए इनोवेटिव मेथड्स को ले जाने के लिए यंग जनरेशन की बहुत ज़रूरत है। सारा हमारा तंत्र जो है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विल रन ऑन द मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी पुराने जनरेशन अलग है, अभी यंगर जनरेशन जो आने वाला है, ये जनरेशन जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से और ज़्यादा हमारे डेवलपमेंट को और फास्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस भावना से जो है, आप लोग और एक विषय मैं कहना चाहता हूँ, आइडियालॉजी रहता है, अनेक प्रकार के आइडियालॉजीज रहते हैं। आइडियालॉजी ठीक है, आइडियालॉजी में कोई किसी को दबाव डालने की जरूरत नहीं है। ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जो है सब लोगों को आदर करना चाहिए, सब लोगों का विचार को सुनना चाहिए और सब लोगों का विचार को भी हम दृष्टिकोण में रख लेना चाहिए। तो इसलिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक माइंड। डेमोक्रेटिक माइंड होना चाहिए। डेमोक्रेटिक माइंड से ही जो है हम
आगे बढ़ने का और कुछ काम करेंगे। और मुझे विश्वास है आप लोग फ्यूचर लीडरशिप को, फ्यूचर इंडिया, फ्यूचर लीडरशिप, फ्यूचर इंडिया, इसके लिए भी आप लोगों का जो विचार नई पीढ़ी का होना चाहिए वो पूरा एक विश्वास के साथ रहना चाहिए, एक विश्वास रहना, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी इसमें जो है मैं एक करेज, कन्विक्शन, ऐसा मैं ठहरूंगा। ये भावना जब रहेगा उसमें दृढ़ता होती है, निर्णय लेने में क्षमता होती है। पॉलिटिक्स में लीडर बनने के लिए केवल लीडर बनना नहीं है, निर्णय करना है, फैसला करना है। फैसला करके उसको हम समाज के भलाई के लिए काम आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस बातों को मैं और एक बार आप सभी लोगों को, मुझे बहुत और खुशी भी है कि और एक विचार भी है, हमारा देश त्याग तपस्या का है। जैसे अभी विश्वनाथ जी ने बताया था संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में, बहुत पुराना जो है हमारे वैल्यूज है, हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है। इसको मूल से जानने के लिए कोशिश होना चाहिए। ऊपर ऊपर से जानने से पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं तो और एक बार इसको आपको पुनः मैं बोलना चाहता हूँ, यंगर जनरेशन शुड नो दैट our heritage, our history, our culture. Without knowing our culture, without knowing our heritage, without knowing our sentiments, you can't unite the people. You can't unite the people. इस विषय पे आप सब लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और एक बार सभी लोगों को मुझे इसमें भाग लेने का और उसमें आपका विचार सुनने का और मुझे बोलने का जो मौका मिला है, उसके लिए मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। Namaste. MIT-WPU University Founder President Professor Dr. Vishwanath Karad, Executive Vice President श्री राहुल वी कराड़ और पूरी MIT फैमिली की तरफ से मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी सर, और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे 16th बैच के कमेंसमेंट सेरेमनी में आपने भाग लिया और हमारे बच्चों से पॉलिटिकल लीडरशिप और हमारी नॉलेज और हिस्ट्री के बारे में अपने ऊंचे विचार हमारे साथ शेयर किए। Since Honorable Governor of Himachal Pradesh, our chief guest, Shri Bandaru Dattatreya ji, is having some other pressing official engagements to carry on. He'll be leaving this ceremony, but we, the MIT-WPU family, would like to thank him from the bottom of our heart for gracing this occasion with your presence and your words of wisdom. Thank you so much, sir, for having come here and spoke to our students. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Pranam. Now, let me invite Senior Director of MIT School of Government and Public Policy, former IPS officer, Shri Ravindranath Patel ji, to address the audience. Sir, over to you. Thank you so much. Respected dignitaries and ladies and gentlemen. Today's chief guest, His Excellency, the Honorable Governor of Himachal Pradesh, Shri Bandaru Dattatreya ji, conveyed a great message about politics as a mission and value-based politics. I was reminded of a book named The Audacity of Hope that was published in 2006 by the legendary US leader Barack Obama, who went on to become the 44th President of the United States.
The title of the book was carefully chosen to convey a message that sometimes one needs to have an audacity or a great courage to uphold human values, to uphold hope. When the framers of Indian Constitution adopted preamble, they gave us 4 supreme values: justice, liberty, equality, and fraternity. These values constituted our audacity of hope to see India as a vibrant democracy. It was in furtherance of this hope that our beloved founder President Dr. Vishwanath Ji Karad sir and Executive President of MIT-WPU Professor Rahul Ji Karad sir rolled out one of the first education programs to groom a political leadership in India. Because India, being the world's biggest and the most vibrant democracy, needs a next generation leadership. We need competent politicians with an impeccable integrity. We need visionary leaders who can propel the nation with an escape velocity. Yes, it's a hope. And today's commencement ceremony is yet another milestone in MIT-WPU journey of hope. I congratulate and welcome every student who has joined this journey, which I agree is a thorny path. I would like to conclude with the poem of late Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji. बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए. बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए. पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं. पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं. निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा. कदम मिलाकर चलना होगा. कदम मिलाकर चलना होगा. Thank you so much. Thank you so much, sir, for those words and those views. Next, let me invite Mr. Amit Kumar, an alumni of MPG of Batch 11 from Jharkhand, to express his views. मैं अमित कुमार हूं, जो भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड से ताल्लुक रखता हूं. मैं बैच 11 से पास आउट हूं और यहाँ उपस्थित तमाम सारे गेस्ट्स का मैं शुक्रिया करता हूं और धन्यवाद बोलता हूं कि वो यहाँ आए और अपना कीमती समय दिया. बात बचपन की है कि लोग कहते थे कि हर किसी को भगत सिंह चाहिए, हर किसी को भगत सिंह चाहिए, बट उन्हें अपने घर में नहीं चाहिए, उन्हें पड़ोस वाले घर में चाहिए. तो मैंने जब यह बात सुनी तो आज के इस युग में जब हमें आज़ादी मिल गई है और हमें जब आज़ादी जिन पूर्वजों के द्वारा मिली है, उनके भारत को बनाने के लिए हमें भगत सिंह बनना होगा, हमें महात्मा गांधी बनना होगा, हमें राजगुरु सुखदेव बनना होगा और इसके लिए हमें राजनीति में आना होगा. लेकिन सिर्फ राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में नहीं आना होगा, हमें एक शिक्षित और एक पढ़े लिखे राजनीतिक तौर पे काम करना होगा, कार्य करना होगा. और इसी की खोज में मैं MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में बैच 11 से पढ़ा, पास आउट हुआ और मुझे इतना ब्रॉड प्रोस्पेक्टस से यहाँ पढ़ाया गया, इतने तमाम अच्छे लेक्चर्स मिले, इतने अच्छे नेताओं से मिलने का मौका मिला. ग्राम पंचायत गया, जिला परिषद गया, लोगों से मिला और ये जाना कि अगर हम जब यहाँ से निकलते हैं तो हमें किस तरह राजनीति के क्षेत्र में काम करना है, सामाजिक कार्यों में काम करना है कि हम इस देश को आगे ले जा सके, ताकि इस देश को जो महाशक्ति बनना है इस 21वीं सदी में, वो किस तरह हम उस फौज में शामिल हो सके और इस देश को आगे प्रगति पे ले जाए. इसी दौर में विकास की एक राजनीति चल रही थी, विकास की राजनीति चल रही थी, तो जिसमें सिर्फ 2 पहलुओं पे ही बात होती थी और 2 पहलुओं को छोड़ दिया गया था. एक आर्थिक विकास और दूसरा आधिकारिक संरचना विकास की बात की जाती थी. लेकिन सामाजिक विकास और मानसिक विकास को कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया था. इन पहलुओं पे कोई नहीं बात करता था. और ये MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट से ही मैंने जो पढ़ा सीखा, इसी पे मैंने एक छोटा सा संगठन बनाया, झारखंड जन अधिकार मोर्चा. और ये मेरा एक इंडिपेंडेंट संगठन है जिसे मैंने खुद फाउंड किया. और मैं जब कहीं बात करता हूं, किसी की हक की लड़ाई लड़ता हूं, तो इन 4 पहलुओं पे बात करता हूं. और मुझे भी यह पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ पढ़ के हमारे बैच के लोग या हमारे सीनियर लोग आज क्षेत्र में काम कर रहे हैं और नई उपलब्धियां गिना रहे हैं, कर रहे हैं,
तो आने वाले बैच, जो अभी बैच MPG 16 है, यहाँ के भी सारे बच्चे इसी तरह निकलेंगे, काम करेंगे। आपके पास बहुत बड़ा स्कोप है, आप यहाँ बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि आप विश्वनाथ कराड़ सर, राहुल कराड़ सर के गाइडेंस में रहोगे, जो खुद अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। और इन दो पहलुओं पे काम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, सामाजिक विकास और मानसिक विकास। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। मेरे शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप आए इस बैच में और पढ़ रहे हैं। पर जाने से पहले मैं आपसे दो पंक्तियां कहूंगा जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक छोटी सी कविता से है। विपदा से मेरी रक्षा करना मेरी यह प्रार्थना नहीं, विपदा से मेरी रक्षा करना मेरी यह प्रार्थना नहीं, विपदा से मैं डरूं नहीं, इतना ही करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद अमित, आपके विचार प्रकट करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव विद अस ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोक सभा श्री रितेश पांडे जी फ्रॉम उत्तर प्रदेश. He is a first-time member of parliament representing the Ambedkar Nagar in Uttar Pradesh. As a young first-time MP, Ritesh ji has worked to highlight pressing local, national and international issues related to climate change, caste equality, transgender rights, press freedom and farmers' welfare. May I now request my technical team to play a small film on Shri Ritesh Pandey ji. Shri Ritesh Pandey is the Member of Parliament from Ambedkar Nagar constituency. He was appointed leader of BSP in the Lok Sabha in January 2020, and prior to this appointment, he served as the deputy leader. He has also been a member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly from the Jalalpur constituency in Ambedkar Nagar, which he represented between June 2017 and May 2019. Shri Pandey, son of Shri Rakesh Pandey, former member of parliament from Ambedkar Nagar, won the Lok Sabha polls during the 2019 Indian parliamentary elections from Ambedkar Nagar. He was elected MLA from Jalalpur constituency during the assembly elections of 2017. Well known for his social work, he is the chairman of the Raghurajji Devi Foundation Trust, working for reforming education and promoting cultural events for the youth. He is also the co-founder and CEO of Awadh Mutineers, a grassroots sports initiative that trains and supports underprivileged children for playing football. He has a bachelor's degree in international business management from the European Business School in London. It is an honor to welcome Shri Ritesh Pandey. Hello, can you hear me? Thank you, sir. Sir, before you begin, I humbly request all our guests of honor to humbly to stick to their time limits so that we can have more question answers from all the students. Sir, over to you. Thank you very much. Good evening to Dr. Vishwanath Karat, Chief Guest, esteemed faculty, and finally all the students of the 16th batch Master's Program Political Leadership and Government. First of all, I would like to say congratulations to you for achieving admissions into an esteemed and forward-thinking institution like MIT World Peace University. This is an unbelievable time to begin your higher studies. Who would have thought that you would be listening to this speech at home in the midst of a global pandemic that has affected the world at a scale not seen? Sir, there is some technical issue from your side. Your voice is breaking, sir. Can you not? Sorry, I have a full connection here. Is it okay now? Okay. Now it is clear, sir. You want me to begin again? No, sir, that is fine. Okay, all right. So, as I was saying, this is an unbelievable time to begin your higher studies. Who would have thought that you would be listening to this speech at home in the midst of a global pandemic that has affected the world at a scale not seen for the last 100 years? I think we can't hear you, Ritesh ji. There is some, when you are leaning like this, there is some connection. Before it was fine, but again, okay.
And now it is fine. Can you hear me now? Yeah, this is now fine. But when you are going Okay. back, there is some connection issue. And yeah, I'll lean forward. I'll yeah. lean forward. Yeah. This position, if you speak, I think it is fine now. Yes. Okay. Thank you. So I'll begin again. So we need to No. There is some. रितेश जी थोड़ा सा कहीं पे तो कुछ तो दिक्कत है वहां पे कनेक्शन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस द वॉइस इज क्रैकिंग I don't know, I'm fully connected. मैं आपको पता चला सुन रहा हूँ। बीच में आवाज सही आई थी बट अभी आवाज नहीं आ रही आपकी और काफी डिस्टर्बेंस है आपके इसमें मतलब हम खाली 20% आपको सुन सकते हैं बट इट इज नॉट क्लियर अभी नहीं आई थिंक वी कांट हियर यू आप मैडम भाई आपको सुनाई दे रहा है No, sir. If you have any headset, sir, if you can connect your headset and talk over it, maybe that issue might be resolved. If you have a normal mobile headset. Okay, yeah, well, I'll have to go out and get it. Maybe here, but I thought, is it working now or no? Or maybe no, it is not working. No, sir, there is some issue from your end. Okay. Okay, why don't you maybe the next एक 5-10 मिनट में आपका थोड़ा कनेक्शन का इशू समझ लेते हैं maybe the next guest can speak and then you can speak. Absolutely, no problem. I appreciate it. Thank you, Madam Pai. Yes, sir. With your permission, sir, we have with us today Shri Dinesh Gundu, Honorable MLA from Nagar constituency, Bengaluru, Karnataka, who is also a former Minister of State, Government of Karnataka, and former President of the Karnataka Pradesh Congress Committee. He is a politician of the Indian National Congress from Karnataka, and we are very happy and fortunate to have him here as a guest of honor. I request my technical team to kindly play the film on Shri Dinesh Gundu. Shri Dinesh Gundu Rao is an Indian politician and member of the Karnataka Legislative Assembly. Born in Coorg, he is the son of former Chief Minister of Karnataka, Shri R. Gundu Rao. A 1992 pass-out engineer with BE in Electronics and Communications from BMS College of Engineering, Shri Rao made his political debut by joining the Indian National Congress in 1993. He is the former Minister of State for Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Government of Karnataka, and former President, Karnataka Pradesh Congress Committee. He is also a 5-time winner in the Karnataka elections. Being soft-spoken and known for his organizational skills, he is an inspiration for many young aspiring leaders. We are honored to welcome Shri Dinesh Gundu Rao. Thank you, my technical team. Sir, we request you now to address our audience. Over to you, sir. Thank you. Hello, everyone. It gives me great pleasure to be part of this inaugural batch of the 2020-21 ceremony. I have not previously heard much about the MIT School of Government, but after I got the invitation, I did look through what they were doing, and I was really very impressed because I do not think that there is any such, I've heard of any such institute in the country which is doing work in the sphere of developing youngsters for a political career. And that I think is something very unique, and I want to congratulate the MIT team, especially Shri Rahul Karad and his entire faculty and staff and the members of the MIT-WPU. So it gives me great pleasure to be here. And it is a very unique time that we're all meeting. The world is turned upside down due to the pandemic, and I think for the first time
people are experiencing something which nobody has ever experienced before. Being in isolation, being by yourself, trying to understand what's happening. And also, I think a lot of self-awareness and thought processes also are taking place in this time. So I think for many of the youngsters who have joined this course, it may be a challenging time for you. Maybe wondering, did I land up at the wrong time? Because many of you have not been able to go to college, many of you have not been able to attend classes like you would love to be part of, and now doing online education does have its limitations. But I think all of you who have joined this course, I feel there's something in you that is which takes on adversity, because the course that you've taken up and probably what you're thinking of in the future, a political career or a career in government or a career in public life, adversity is going to be part of your life every day. There'll be some things happening which is unforeseen. Suddenly some things will turn, some events will occur and things turn upside down. So in the field of politics and in the field of governance, in the field of public life, you have to be prepared for the unexpected. And I think joining a course during this pandemic itself is training you to prepare yourself for the unexpected. And I'm sure that you will take this upon yourself as a challenge, and you will be able to adapt yourself and innovate. There is a book written by a great scientist. His name is Charles Darwin, The Origin of the Species. So in that he says, the species which is the strongest or the fastest is not the one which is going to survive. It's a species which can adapt the fastest, the quickest. That's the species which survives the longest. So I think for all of us to be able to adapt quickly, to be able to understand what's happening around us as soon as we can, and to take decisions based upon those changes is what I think is required in every profession. But I think in the field of politics, in the field of public life, it's even more important, because what you do and what you say has a huge impact, not only just about on yourself or your near and dear ones, but also on so many other people. So it's a very exciting course. I mean, I wish when I was studying my engineering, I had a course like this, and Mr. Rahul Karat was there and started this kind of a course. I would surely joined one, because though I was not that keen on a political career at that stage, I had a little bit of student politics in me, and something like this would have really pushed me on, given me more confidence. Because when I started my career, I didn't have the kind of confidence that I should have had. And though I come from a political family, and I joined my career after my father passed away at a young age, the initial struggle that I went through, I think really toughened me up. And I think this kind of a course will probably prepare you for what to expect. You're seeing things from what's happening through your internship programs, through your tours, through your interactions with political leaders, administrative officers, and of course your faculty. You will be able to learn so much more. So I'm sure that will inspire you to work in the sphere that you've chosen. And I'm sure that many of you are going to do very well. I wish you all the very best. At the same time, let me also tell you that I heard His Excellency the Governor speak, and he spoke very well. I think he brought in a lot of subjects to his speech, and one of it that he said was, which really touched me also, was that politics is not a profession. If you make politics your profession, then there is going to be trouble for you. All of you students, if you're going to be thinking that tomorrow, I'm sure you yourself know a lot about it because you're doing a master's course, you do know a lot. But it cannot be a profession which can sustain you. It cannot be a profession which is going to take care of you financially, because you don't know what's going to happen. It's a very insecure field. What is it that you're looking for? Whether you want to do electoral politics, whether you want to work with a political party, all that decisions that you will be making. But here, there's nothing like a salary. There is no pension. If you do well, nobody's going to come and say that I'm going to give you a bonus, or there's going to be an automatic promotion. There's nothing like that over here. So here, it is something which is more connected to service. It's much more connected to what you want to achieve, your will,
your inspiration, and what that you dream of doing. So my advice to all of you is that if you don't make politics a profession, make politics a part of your life. You're passionate about it. Do things, but keep something going by your side. If you've got a family supporting you, fine. If you've got some other ways of raising your income, fine. Otherwise, have another profession along with what you're doing. Because then, if you're going to be dependent upon this, then you'll be filled with a lot of insecurities, and you'll end up doing things which you don't want to do. And I think many people do get caught in the trap, and then that's when your idealism, what you want to do, you compromise on that. So that should not happen. So the other thing I would like to tell all the students is that you got to be true to yourself. What is it that when you're going to finish this course, I'm sure you're going to evolve in the next couple of years. So what is it that you believe in? What is your idea of India? What is it that you dream of India to be? What is your ideological inclinations? What is it that you feel, what is it that actually interests you in joining politics? So these are the things that you have to think about. And when you go out, you got to make decisions based upon what you believe in. Whether you're a conservative, whether you're a liberal person, whether you're a communist, whether you're a socialist, there are so many different political outfits. There are so many different organizations and political parties, and you work with that political party or with a political group which you believe in. Don't go and join a political party because you think, okay, this party is doing well, so if I join this party now, I'm going to be able to rise in the ranks. If that is your initial starting point, then I think your starting itself is going to be, it's a wrong way to start off with. So you have to do things that you believe in. Now, I come from a Congress family, so naturally for me it has always been, okay, I should join Congress. But at the same time, now I've been in this field for more than 20, 25 years now, because I started young at 23. So I've faced 5 elections. I've seen my ups and downs, though thankfully I've never lost an election. I've been the party youth Congress worker. I've been the state youth Congress president. I've been a district Congress president. I've been MLA 5 times. I've been a minister once. I've been the state party president also. So there have been times when you feel disheartened. When your political party is doing well, fine, then you're also going along with it. You feel, yes, things are going well. But there are times when your party does not do well. You don't form the government, or the party is not doing as well as it should be doing. You feel disheartened. So there are pressures which come in. People do put pressure on you, say, okay, why don't you join our political party? Or there have been so many instances where people have tried to, woo us to join other political parties where things can be better for us. So it's never occurred to me ever that I should ever leave the Congress. I'm not saying you should join the Congress because that's your decision. You can join the BJP, you can join the Congress, you can join the Communist Party, you can join Shiv Sena, whatever you believe in. But you got to have the conviction within yourself that this is the party which I believe in. This is the ideology which I believe in. And through this party, I can bring about a change. So that fundamental truth you should imbibe. You should have the commitment to that ideology. You should have the commitment to the program. You should have a commitment to the political party. That, I think, is something that all of you have to, I think, introspect, think about before you take a decision. I do not know what decision you're going to take once you pass out, because you may even end up not joining politics. This can be still a great experience because it's going to help you anyway in doing many other things in life. Because what you learn from this, I heard the Jharkhand person speaking, and what you learn from from your program, which I have been able to, I did my own research and found out that it gives you an idea of what India is. What are the factors that is driving this country? What is this? What are the problems that the people are facing? It gives you an outlook which I don't think any program in any field can give you that kind of an insight. That is what this program is going to give you. So I do not know whether you will join the political party or join a political system. But even then, I think this program is going to be great. But if you do join, and if you do want to become a politician, I think that speech will be good for when you're graduating. You're just starting off now. But what I would tell you is that you got to bring something to the table. This is a competitive world, and politics is even more competitive.
I would not say it's a rat race, but I would say that there are going to be lots of pulls and pressures. And if you want to rise in the political spectrum, you got to be able to bring something to the table to the political party that, see, there's a difference which I can bring about. It could be by your speech making. If you're a great speaker, if you're a great orator, if you can convey your message wonderfully well, that's a great asset to have, which any political party will grab. And that's a way to, rise in the political ranks. Or you want to like go and do organizational work, go around, build the party, meet the workers, do the grassroots work. I think that is something which which will help you in really coming up in a political system. Or you can, there are different ways. You can become part of the think tank, the policy making, influencing policies, influencing what the government is going to do if you come to power, or what position the party should take. So you can become an intellectual person within the party. So, or you work within your constituency, within the place where you want to contest, you have interest in electoral politics. So these are various options that are there. But you got to think throughout your 2 years, after you graduate, and if you want to join a political party, is that how can I be different? Because there are so many thousands and thousands of people here. So how is it that the political leadership is going to look at you? So there are a few things that you have to have. One is you have to have the commitment. You got to put in the hard work, and you got to have the belief system, and you got to be loyal to what you're doing. And if you have those basic principles, and if you're really committed, I do not see why you cannot make a successful career in politics, whether it is electoral or non-electoral. But either way, there is definitely opportunities. And I think people want new faces. People want new people who are committed, who can come out and give the energy. Every political party is looking for new energetic people. But the problem is, are they committed enough? Are they really serious will they be there for the long run? Will they go through the tough, because there will be ups and downs, there'll be tough times, there'll be good times, but are they willing to go through the tough times? And work with what the system is offering. So these are the things I think which all of you will have to look at. And of course, I will not paint a very rosy picture. Yes, India has done wonderfully well. Freedom movement, what the Honorable Governor spoke about, was a movement which was before we came to power. But since then, in the last 73 years or so, India has done phenomenally well. Despite all the people saying so many things about this country, we are one of the most well-respected countries in the world. We have functional democracy, which many countries have not been able to have functional democracies. Even in our own South Asian region, if you look at Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, our democracy has always been thriving, throbbing, and it's dynamic, sometimes chaotic, but the expression of the people is allowed here, So that's a phenomenal thing. And India is recognized throughout the world as a country which accepts all religions, all castes, our diversity, our languages. This is a model for the entire world. If India can succeed, why can't any other country succeed? That's what India is teaching the world. And that's what our core essence is. So those are good points. But at the same time, there are many things which are still need to be, there are issues. We are seeing the corruption, which is there, which exists. We see how, for the sake of power, we can do anything. We've been seeing how governments are being toppled, have been toppled in the past, are being toppled. We have seen how institutions are being misused. I'm not blaming any political party here. I don't want to take a political position, whether it's Congress or BJP or any government or any political party. They've all misused when the opportunities have come to see that they somehow remain in power, continue in power. So our institutions today, I feel, somewhere are getting eroded. And there is this frenzy that is being built up. Somewhere I think India is the brotherhood, the love for each other. Again, I'm referring to what Governor said, that prem, whatever may be our differences, but we should be able to live together in peace. We should be able to love each other. Somehow this atmosphere of hate, if you don't believe in what I am saying, then I hate you. That kind of a thing, if that happens, that's going to divide this country, and it's happening in front of us. We've seen mob lynchings, we've seen violence,
the name of caste, name of religion, the name of region. Now Maharashtra and Karnataka, we have border states. So many times we have disputes on the border. Yes, we may have disputes on the border. It doesn't mean that we have to end up getting violent with that. There are so many ways of settling issues. There is a parliament, there is courts, there are so many institutions, there is democracy, which can sit and discuss. So these are the things that are there, which are challenges. And I think once all of you, I hope, I seriously do hope that all of you who will come through this course will be able to contribute in a better way, because it will make you a better politician. I don't think anybody can become the best politician, but this course can make you a better politician or a better person than what you are. And that's what I hope is going to emerge from this. And I always believed in one, before I conclude my speech, I won't say anything further, but my one belief there's always been is that becoming the best is not important. All of your students, you may say, I should become the best, I should become an MLA, I should become a chief minister or a prime minister. Becoming the best is not important. Doing your best is what is important. You do your best. You do to the utmost of your capability. Be honest to what you're doing. I think the results will take care of itself. Wow. So all of you students, do your best. Let the future unfold itself. Have a big world view, a large conclusions. Today's world of misinformation. Think for yourself what's happening. Be rational and take good decisions. I'm sure all of you will have a great future and a great career, whether in politics or outside of it. So I also want to thank on this occasion the trustees and members of the MIT, also from Karnataka. The professor was here. Dr. Haridas. Professor Haridas. Or ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತು ಅವರು ಕನ್ನಡವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ Karaji, your work really inspiring, and of course the entire team. I thank you very much for calling me, and I wish all the students all the very best. Thank you. Thank you so much, sir, for those words. I think, Madam Pai, I think it was a wonderful talk. Just I'm interrupting your but it was a very emotional, very transparent dialogue by Shri Dinesh ji. He has come from such a political family with such a strong background, and he himself, generally people, they achieve something, but this transparency is many times from many people. When I was reading Mahatma Gandhi's biography, I said, that the transparency and today also I see that today's leaders, they need to be transparent. And I think you beautifully shared these very important tips to the present batch, Dinesh ji, and I'm really tempted what Honorable Governor shared his mind also with the beautiful thoughts, a very philosophical and very important message he gave to his speech. But I think a very, very candid, transparent and honest message you have given through your this delivery. Thank you once again for participating, sir. And someday, maybe after the COVID, try and visit our institution and School of Government. And we are always in a search of some such leader who are very balanced. Now, though you are a congressman, but you understood the very, very essence and importance of this platform. And as a democracy as a whole, and as a governance model for the country, and this comparison with the world and some other developing economies, what you shared, it was fantastic. I think it will definitely help my batch. Thank you so much for this neutral and very candid views. Thank you. Thank you. I definitely love to come once all these things. Please do that. Please. Namaskar. Thank you so much, Dinesh ji. Wouldn't agree more, sir. As Rahul sir correctly said, it was a very candid conversation, very balanced and poised, and giving the right message to students that pursue your passion and not make this as a career to make money. Be transparent and be committed to the nation so that you can grow with the nation. Thank you so much, sir. I think Ritesh Pandeyji's problem is fixed, and may I now request Ritesh ji to kindly address our students. Ritesh ji, can you hear me? Can you hear me? Yes, sir, I can hear you, but you're not visible to us. Oh, really? No, even video is on. Yeah, on. Yes. Yeah, it's on. Yes, sir, yes. So you can hear me properly?
Yes. Yes, There's no, you're audible. okay. Okay, thank you. So, good evening to Dr. Vishwanath Karat, Honorable Chief Guest, esteemed faculty, and finally, all the students of the 16th batch of the Master's Program in Political Leadership and Government. First of all, I would like to say congratulations to all the students for achieving admissions into an esteemed and forward-thinking institution like MIT World Peace University. This is an unbelievable time to begin your higher studies. And who would have thought that you would be listening to this speech at home in the midst of a global pandemic that has affected the world at a scale not seen for the last 100 years? In the midst of economic hardship, not witnessed for many generations. In the midst of an upheaval of everything we have called normal. But for all its disruption, the COVID-19 pandemic, can you hear me? Sorry, Yes, sir. am I Yes, audible? sir. Is it okay? But for Yes, all sir. its disruption, the COVID-19 pandemic has also created an opportunity to reflect, to introspect, to radically change the way we live our lives. Because if we are being frank, the way we lived before was not sustainable. The way we traveled was not sustainable. The way we conducted business was not sustainable. It led to crises far worse than COVID-19. Some of you may be thinking, what could possibly be worse than COVID-19? I am talking about climate change, a slow-burning train that is hurtling towards us at speed we are not prepared to handle. It is the single biggest crisis that we face today. Climate change will result in death rates that are at best on par and at worst 5 times higher than COVID-19. The average global death rate of COVID-19 is 14 deaths per 1 lakh people. This will be the average global death rate for climate change induced disasters in 2060, which is less than 40 years from now. If we don't slow the pace of our carbon emissions, then by the year 2100, the average global death toll of climate change will have increased to 73 deaths per 1 lakh people. But these are just global averages. The terrible reality of any natural disaster, be it a global pandemic or climate change, is that resource-poor countries will suffer more than the wealthier countries, which means that climate change will be far deadlier in these nations. Climate change, like COVID-19, will not only worsen existing inequalities, but also create new inequalities among resource-rich and resource-poor countries, and among the rich and poor within each country. As we have seen today, the people who had the least job security before the pandemic are the ones who have suffered the largest losses during the pandemic. Similarly, in natural disasters like floods, droughts, heat waves, and hurricanes, the poorest with the least accumulation of assets suffer the most harm in the form of loss of life, loss of livelihood, and mass displacement. The poorest people also have longer recovery periods in any natural disaster. Often, they live in constant risk of a double whammy. They recover from one disaster only to have another economic recession or natural disaster destabilize their lives. Climate change will make resources like land, clean water, and clean air more scarce than they are today. This will increase the competition for resources in socio-economically diverse communities and give rise to intolerance between stronger and weaker communities. Today, what I witness every single day in my constituency is scarcity played out in every aspect of struggle of common people. The scarcity of respectable jobs, of public education,
of medical infrastructure, and perhaps the most gruesome of all scarcities in rural India, the scarcity of land. In a hierarchical and stratified community that is separated along harsh lines of caste, religion, and class, the scarcity of land fuels deadly conflicts among Hindus and Muslims, among forward and backward castes, and even among families. These are not alarmist claims. The science is clear. It has been clear since the 1980s. When we realized that emissions caused by human activities were warming the planet and driving unpredictable change in the Earth's climate. Since the year 1880, the average global temperature has increased by 1 degree Celsius. 2/3 of the temperature increase has happened in the last 45 years. Scientists predict that we need to stay within the range of 1.5 to 2 degrees Celsius in order to avert most disastrous consequences of climate change. At our current pace, we are set to reach 3 degrees of warming by the year 2100. Even a 1.5 to 2 degrees increase in global warming will have a dire impact on poorer and hotter nations, more so than their more developed and colder counterparts. Take our own beloved Mumbai, for instance. According to a paper published last October, by 2050, rising seas will flood over and wipe out large parts of the city. By 2050, parts of Central and South India will be so hot that they will be unlivable. A question that a lot of you may be asking yourselves now is, why did I choose to darken the mood of today's August gathering with terrible predictions of the consequences of our actions, or as we have it, our inactions? It's because today's gathering is about faith. The faith that your parents have in you, that your college has in you, and that you have in yourself. It is because I have faith in you. You are the most empathetic, most progressive, most empowered generations of our world. You have the technological tools and the boundless compassion to create lasting change. And you will also be the ones to suffer the most deadly consequences of climate change. As you now begin your educational journey in political leadership and government program, I want you to remember the following lessons. First, that climate justice is social justice. If you care about social justice, if you care about poverty alleviation, political accountability, caste inequality and equality, gender parity, then you must tackle climate change. Like the COVID-19 crisis, the climate crisis cannot be managed by scientists and researchers alone. We need economists. We need political thinkers. We need policy thinkers, and we need civil servants, and of course, politicians, to listen and act on the science. In fact, we can see today how the United States, despite being the wealthiest nation in the world, is the worst affected by the pandemic. The climate crisis is multifaceted, and it will only be mitigated by interdisciplinary scholarship, the kind of scholarship offered by your program, the kind of scholarship that you must hone in your own intellectual and professional pursuits in order to tackle the world's biggest challenge. Second, I want you to remember that any climate solution must be developed keeping in mind the aspirations and the well-being of the world's poorest populations. The worldwide lockdown halted air travel, reduced demand for fuel and electricity at an unprecedented scale. It also led to clear skies in Delhi and an 8% reduction in global carbon emissions.
But think about the cost at which we achieved that 8% reduction. Millions of people jobless, businesses shut down, a deep economic recession, and thousands of people dead. Our challenge for the future is to achieve a reduction in carbon emission while growing and while developing our economy. In a country such as ours, where per capita energy consumption is among the lowest in the world, the need of the hour is to power more homes, is to empower more women with smartphones and more students with internet connections. So we shouldn't look to consume less energy in the future. We must consume more energy. But this energy must come from clean, carbon neutral, and renewable resources. The last thing I will leave you with today is a simple notion. Climate change must become a voting issue. The youth must question their government. How will we make our country resilient to the impacts of climate change? How will we reduce and ultimately remove our reliance on fossil fuels? How will we lead the world in carbon neutral development? The science may be loud and clear, but the political will across party line has been lukewarm. But it's important to remember that the representatives that a society elects mirrors the desires and aspirations of that society. And in this large society, educated and engaged youth are a minority voice. The majority voice is disenfranchised and dispossessed, masses whose existence is a constant struggle of survival and dignity. For meeting the basic needs of their family's survival and dignity, for example, shelter, food, a good education, a respectable job, access to healthcare, these are the people who need to be empowered so their voice can join your voice in the demand for change. Until the common man demands political accountability, corruption and intimidation will not perish. Until the common man demands equality, division will not die. Until the common man demands climate justice, our planet will not survive. You must use your education to educate others on the challenges facing humanity. You must use your education to empower the voiceless, to have a voice that is loud as your voice. You must use your education to fight for everything that is right, just, and fair. You must use your education to fight for a safe, strong, and sustainable future for ourselves and for our great nation. And I have faith that you can achieve just that. Thank you very much and all the best. Thank you so much, sir, for those very deep rooted thoughts and very idealistic, and those seem to be idealistic. That is the need of the hour. What you spoke about, some critical issues like climate change, and to give voice through our voice to the voice of the unheard. So thank you so much, sir, for enlightening us on the topic. Thank you, Ritesh, for it was a wonderful delivery, and I think very, very academic, very, very relevant for this today's commencement of 16th batch and the new student leaders who thought of being a part of this journey. And it will be definitely very, very useful. Maybe after pandemic, again, I would like to request you must find time to come physically here someday and spend maybe 1 or 2 days with the student and this very concept. All 15 batches who are passed out, they are working with various political parties in various capacities so far. And we are ambitious that we are already developed network with various Vidhan Sabhas in the country. And in your capacity, I expect in your state, maybe Uttar Pradesh Vidhan Sabha, various other, even other states also, we can think to propagate this very thought of training in public life, training in education in politics, this very concept. Thank you so much, Ritesh ji.
Thank you. Thank you very much. With everybody's permission, may I now introduce our next guest of honor, Shri Hardik Patel ji, who is the working president of the Gujarat Pradesh Congress Committee. He is a member of the Indian National Congress Party and is a social leader fighting for the rights of youth, farmers, and women empowerment. He has been in a long and arduous fight against injustices towards the downtrodden from Gujarat and has held successive rallies with an aim to demand inclusion of the neglected people. May I now request my technical team to kindly relay a film on Shri Hardik Patel. Shri Hardik Patel is the working president of the Gujarat Pradesh Congress Committee. He is the member of the Indian National Congress Party and is a social leader fighting for the rights of youth, farmers, and women empowerment. He has been active in politics since his days in college. Shri Hardik Patel was elected as the General Secretary of his college and had won the elections unopposed. He has been in a long and arduous fight against injustices towards the downtrodden from Gujarat and has held successive rallies with an aim to demand inclusion of the neglected people. On 23rd July 2015, he organized his first ever successful rally to give an application letter to the collector's office in Visnagar, followed by a series of rallies. Shri Hardik Patel is an ardent political grassroots worker and has always fought hard for the rights of the youth, farmers, and women empowerment. We are honored to welcome the youth leader, Shri Hardik Patel. Sir, over to you. I request you to address our audience. MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का 16वीं बैच का इस कार्यक्रम में सभी गेस्ट को मेरा नमस्कार। 3 साल पहले छात्र संसद के कार्यक्रम में जब आया था तो ये महामारी नहीं थी, इसलिए लोगों के बीच में आकर बात करने का मौका मिला था और खास तौर पर फाउंडर एंड चीफ पर्सन मिड वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के विश्वनाथ कराड़ जी और राहुल जी से भी मिलने का उस टाइम मौका मिला था। आज जब नौजवानों की राजनीति के बारे में जो चर्चाएं हो रही है और खास तौर पर ये MIT का जो भी आज तक कार्यक्रम हुआ है वो नौजवान और स्टूडेंटों को बढ़ावा देता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो राजनीति हो या नए नए लोगों को मिलने का मौका मिलता है। लास्ट टाइम भी जब हम वहाँ पुणे यूनिवर्सिटी के इस कार्यक्रम में आए थे तब भी हजारों लोग पूरे प्रदेश से, पूरे देश से नौजवान आए थे और काफी मेहमान भी आकर अपने अपने वक्तव्य में नौजवानों को प्रोत्साहित करने का काम किया था। लास्ट टाइम भी मैंने जब बात कही थी तब नौजवानों की शिक्षा के बारे में बात थी। आज राजनीति के बारे में भी काफी कुछ मेरी भी बात ही होगी और लोगों को बढ़ावा मिले, उत्साह मिले, उस पर भी बात करूंगा। जहां से मैं आता हूँ, जिस गांव से मैं आता हूँ, जिस शहर से मैं आता हूँ, वहां पर नौजवान बहुत ही कम राजनीति में देखने को मिलते हैं और वो नौजवान जिसके पापा फार्मर हो या छोटा मोटा व्यापारी हो या धंधा व्यापार करते हो, उनके बेटे बहुत ही कम राजनीति में दिखाई देते हैं। लेकिन जो नौजवान राजनीति में आना चाहते हैं उन नौजवानों के पास क्या रणनीति होनी चाहिए जो नई राजनीति को लेकर आए। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, चाहे वो गुजरात हो चाहे इस देश के बारे में, कि युवा राजनीति को सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उनको सॉल्यूशन की राजनीति का बढ़ावा देना चाहिए। सरकार आती है जाती है लेकिन परेशानियां वही रहती है। मान लो कि कोई और सरकार होती है तो विपक्ष की भूमिका में कोई लोग होते, वो किसानों की आत्महत्या के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, अच्छी शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में आंदोलनें होते हैं, चर्चाएं होती है। लेकिन जब वही विपक्ष सरकार में आते हैं तो जो सरकार विपक्ष में आती है वही फिर से वही मुद्दे और वही बातें लेकर चर्चाएं करती है। मैं एक बहुत ही चिंताजनक शब्द कहूंगा यहाँ पर, मेरे गुजरात में हर दिन 50 नौजवान बाहर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, और वहीं पढ़ाई करने के बाद सेटल हो जाते हैं। तो ऐसी क्या नौबत आ चुकी है कि हमारा देश का नौजवान यहाँ से पढ़ाई करने के लिए भी बाहर जा रहा है, वहीं रोजगार ढूंढ लेता है
और यहाँ की राजनीति से भी दूर रहता है। जैसे मैंने राहुल कराड़ जी का अभी कुछ शब्द मैंने सुने थे, उन्होंने कहा कि हमारा नौजवान जो है वो राजनीति को भ्रष्टाचारी समझता है, कीचड़ समझता है, कोई पार्टी अच्छी नहीं है। ये यहाँ के नौजवानों के दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है। मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना, क्योंकि जो नौजवान है वो ये चाहते हैं कि राजनीति में आना चाहिए या फिर राजनीति में नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक नौजवान राजनीति में नहीं आएगा तब तक यहाँ की राजनीति की वो पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएगा। जैसे कि मैं एक आंकड़ा देता हूँ कि हमारी संसद में अभी 20% लोग ही 40 वर्ष की उम्र से कम के लोग हैं, बाकी सब 40 साल की उम्र से ज्यादा लोग। तो हम नौजवानों के पास रणनीति होनी चाहिए। जमाना बदल गया है। 30-40 साल पहले जो नौजवान था वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास शिक्षा की कमी थी, फिर भी वो राजनीति में आकर जितना भी हो सका है उसने देश के हितों में काम किया है। आज का जो नौजवान है वो पढ़ा लिखा है, इंग्लिश समझता है, हिंदी ठीक ठाक बोल सकता है, उसने शहरों को देखा है, उसने कंप्यूटर मोबाइल जैसी चीजों को समझा है। तो मेरा ये बहुत ही स्पष्ट मानना है कि जो नौजवान है उन नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए और राजनीति को बेहतर बनाना चाहिए। आज हमारे देश में अभी कल का ही आंकड़ा हम देखें कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते कम से कम 2 करोड़ लोगों का रोजगार छिन गई। राजनीति अगर हम बात करें तो नौजवान राजनीति में बहुत कम आते हैं। तो रोजगार नहीं है हमारे पास, राजनीति में नौजवान कम आएंगे तो इन सारी स्थितियों के सामने लड़ेगा कौन? मेरा एक बहुत ही हास्यास्पद, मैं हर जगह ये बात कहता रहता हूँ कि हमारे जो बुजुर्ग राजनेता है वो कहते हैं कि नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए, ये देश नौजवानों का है, लेकिन वो भी जगह खाली नहीं करते। ऐसा हमारे दिमाग के अंदर प्रतीति बनी हुई है कि जब तक वहां पर बुजुर्ग लोग हैं राजनीति में तब तक नौजवानों को चांस नहीं मिलेगा। आइए आप राजनीति में पैर तो रखिए। मैं जब 23 साल की उम्र में MIT के छात्र संसद कार्यक्रम में आया तो तब बहुत छोटा था। तब वहां के जो स्पीकर वगैरह थे वो बोल रहे थे बहुत ही कम उम्र का बच्चा है, छोटा बच्चा है। 3 साल के बाद 26 साल का 27 साल का हुआ हूँ। तो राजनीति में आकर मैंने एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से समझा है कि जब मेरे पास किसी भी प्रकार का संसाधन नहीं था, मैं किसी भी पद पे नहीं था, मैं किसी भी पार्टी पे नहीं था, फिर भी मैंने गुजरात के उन नौजवानों के लिए शिक्षा और रोजगार के लिए काफी योजनाएं हमने गवर्नमेंट से या लागू करवाई है स्टेट के लिए। उसके बाद अगर 10% रिजर्वेशन का मामला हो पूरे देश में ताकि गरीब लोगों को फायदा मिल सके। मेरा ये बहुत ही स्पष्ट मानना है कि जब तक मैं किसी पद पे नहीं था तब भी मैं इतना अच्छा कर सकता था, तो मुझे राजनीति में आकर भी काफी कुछ अच्छा करना चाहिए। और मैंने एक नया मंत्र राजनीति की गलियारों में, खासतौर पर गुजरात की गलियारों में मैंने रखा है कि हम सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं करेंगे, हम समाधान की राजनीति करेंगे। हर गांव जाएंगे, किस गांव में क्या तकलीफ है, क्या नौजवानों को दिक्कत है, क्या महिलाओं को दिक्कत है, शिक्षा में हमें क्या नया करना चाहिए, स्वास्थ्य के मामले में हमें क्या नया करना चाहिए। तो इन सारी चीजों को हम लोग बैठकर वॉर रूम में उसको लाते हैं, उस पर फिर चर्चाएं करते हैं कि आज दिन प्रतिदिन जो स्कूल का स्तर नीचा जा रहा है, अच्छी स्कूलें आज ये बहुत ही कम दिखने को मिलती गवर्नमेंट के मामले में। जैसे कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा, मेरे गुजरात में एक भी इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। तो हम लोग उस पर काम करना चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को, नई जनरेशन को इस देश के बारे में भी दिखाया जाए। मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे नौजवानों को, सारे स्टूडेंट को एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमें इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। राजनीति, शिक्षा, साथ रोजगार और साथ इतिहास, इन सारी चीजों को हमने समन्वय करना है, क्योंकि हमारे इतिहास को भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से हमारे सामने रखा जाता है। और जितने भी यूथ लीडर है इस देश के अंदर, चाहे किसी भी पार्टी के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, BSP के हो, शिवसेना के हो, तो उन सब नौजवान लीडरों को, हमें नए नौजवानों को कैसे राजनीति में महत्व मिले, उनकी जगह बने, उस पर भी हमें काम करना चाहिए। आज अगर कोई नौजवान राजनीति में आता है तो लोग उससे सवाल करते हैं कि तुम भ्रष्टाचार के इस कीचड़ में क्यों कूद गए, तुम्हारे पास इस देश के लिए कौन सी प्रिंट है ताकि तुम अच्छा कर सको। मेरा ये मानना है कि जब नौजवान राजनीति के गलियारों में पैर रखता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ राजनीति एक धंधे के रूप में नहीं, राजनीति सिर्फ पैसा कमाने की एक दिखावा नहीं, लेकिन राजनीति में जब नौजवान आता है तो उसके पास ब्लूप्रिंट होनी चाहिए इस देश की, इस प्रदेश की। और मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है कि नौजवान जो समझता है कि गुजरात का मतलब क्या, तो कि अहमदाबाद, महाराष्ट्र का मतलब क्या, तो कि बंबई नहीं, महाराष्ट्र का बंबई अकोला का कोई गांव भी हो सकता है, गुजरात का मतलब
सौराष्ट्र का किसी गरीब गांव भी हो सकता है, हमें उस पर भी चिंताएं करनी पड़ेगी। आज पूज्य राजीव गांधी जी की जन्म जयंती भी है। बहुत ही कम उम्र में इस देश के प्रधानमंत्री बने, जो उन्होंने कंप्यूटर क्रांति में, मोबाइल क्रांति में अच्छा काम किया। तो हमें जितने भी यूथ, जो पुराने लीडर्स है यूथ में या फिर अभी जो नए हैं, उनसे काफी कुछ सीखना चाहिए। और आज जो यूथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती है इस देश में, तो वो सबसे बड़ी है रोजगार, सबसे बड़ा है शिक्षा। एक आदमी एक परिवार से जब शिक्षा लेता है, तो सिर्फ उसका भविष्य वो नहीं बनाता, पूरे परिवार का भविष्य बनाता है। लेकिन शिक्षा के बाद क्या, तो उसके पास रोजगार होने चाहिए। मेरा ये मानना है कि आपकी, मान लो MIT में जो पढ़ता हुआ स्टूडेंट है, उसके पास रोजगार कैसे मिले नौजवानों को, राजनीति में आकर रोजगार कैसे पैदा किया जाए लोगों के लिए, उस पर भी मैं मानता हूँ गहरी चिंतन करने की आवश्यकता है। इन सब लोगों को, बहुत बड़ा देश है, 135 करोड़ भारतीयों का ये देश है। और नौजवानों को एक बात समझनी पड़ेगी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब हमारे देश के पास कुछ नहीं था। आज हमने काफी कुछ किया है, लेकिन आज और भी कुछ करना पड़ेगा। खास तौर पर जब टीवी मीडिया में चर्चा होती रहती, बातें होती रहती है पाकिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, तो नौजवान को एक बात समझनी होगी कि हमारी लड़ाई सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान के सामने नहीं है। हमारी लड़ाई चीन और अमेरिका जैसे सशक्त और पावरफुल देशों के सामने टिकने की अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश हमारे सामने कुछ नहीं है। तो हम नौजवानों को दिमाग में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान जैसी चीजों को डाल दिया गया, उससे भी नौजवान को बाहर निकलने की जरूरत है। आज अमेरिका कहाँ है, आज चीन कहाँ है, उसी प्रकार हम अपने देश को कहाँ तक ले जा सकते हैं। हमारे देश को नौजवानों को शिक्षा फ्री में मिले, अच्छी मिले, बेहतरीन मिले। हमारे देश के नौजवान और गरीब परिवारों के लिए बेहतरीन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, उस पर भी नौजवानों को चिंता करने की जरूरत है। और नौजवान, मैं आप सभी स्टूडेंट और नौजवानों को एक विनती करना चाहता हूँ, आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि राजनीति भ्रष्टाचार का अड्डा है। नहीं, राजनीति बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप राजनीति में आओगे तभी आप लोगों का अच्छा कर पाओगे। राजनीति के जरिए ही, रोड पर आंदोलन तो हमने भी किए 4 साल तक, लेकिन सिर्फ रोड पर आंदोलन करने से लोगों का फायदा नहीं हो सकता। आप जाइए विधानसभा में, जाइए संसद में, जाइए, वहां जाकर संविधान को समझिए। संविधान के जरिए 135 करोड़ भारतीयों के लिए हम काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं। काफी कुछ आंकड़े भी हमने देश के सामने थे कि पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 80% लोग नौजवान हैं। तो इन नौजवानों के लिए हमें चिंता करनी चाहिए। नौजवानों को राजनीति में आकर काफी कुछ बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं मानता हूं कि हम नौजवानों को राजनीति में भी ला सकते हैं और अपने देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। साथ ही साथ राजनीति के साथ अगर हम पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हम इतिहास के साथ साथ संविधान को भी समझना पड़ेगा। हमारा संविधान पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन, अगर कोई बुक हम समझे या ग्रंथ मान ले, तो हमारा संविधान है। अगर हमारा संविधान एक दिन के लिए भी इस देश में ठीक से लागू हो जाए, तो मैं मानता हूं वो संविधान पूरी तरह से हमारे देश में सफलता की ओर और लोगों को फायदा दिला सकता है। तो मैं नौजवानों से भी विनती करता हूं कि हमें संविधान को समझना पड़ेगा, संविधान को पढ़ना पड़ेगा और उस संविधान के आधार पर भी हमें काम करना पड़ेगा। अब देश में काफी समस्या है, चाहे वो आतंकवाद की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या हो, गांवों की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, उस पर भी हमें चिंतन करने की जरूरत है। ये चिंता करेगा कौन? 60-70 साल के बुजुर्ग ये चिंता करेंगे तो 5-10 साल ही उनके पास समय बचेगा काम करने का। अगर हम नौजवान 25-30 साल के नौजवान इस पर अगर चिंता करेंगे, तो हमारे पास 30-40 साल बचे हैं जो इस पर हम काम भी कर सकते हैं और इस देश को बेहतरीन रूप से हम तैयार कर सकते हैं। मेरा ये बहुत ही स्पष्ट मानना है कि मैंने जिस तरह से गुजरात और महाराष्ट्र की बात कही कि भारत का मतलब सिर्फ दिल्ली नहीं है, भारत का मतलब सिर्फ बेंगलोर नहीं है, भारत का मतलब सिर्फ बंबई नहीं है, भारत का मतलब सिर्फ पुणे नहीं है, भारत का मतलब है 4 लाख से अधिक गांव। और एक गांव की चिंता भी हम नौजवानों को करनी पड़ेगी। देखिए, बुजुर्ग जो होते हैं वो हमें संस्कार दे सकते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं वो हमें सलाह दे सकते हैं, वो अनुशासन दे सकते हैं, लेकिन संघर्ष करना, विचारों के साथ सोच रखना, वो हम नौजवानों की हिम्मत को बढ़ावा दे सकता है। तो मेरा ये मानना है कि सभी नौजवानों को इस पर काम करना चाहिए और पूरे भारत के अगर नौजवान एकजुट हो जाएंगे, एक ही
विचार शक्ति के साथ, अगर अलग अलग विचार श्रेणी के साथ अगर सोचेंगे, तो मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से मानता हूँ, बिल्कुल सच मानता हूँ कि हमारे देश में युवा ही इस देश को विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बना सकता है। आप भगत सिंह को देख लीजिए ना, सुखदेव को देख लीजिए, राजगुरु को देख लीजिए, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक जान रख दी थी कि आइए हम लड़ने के लिए, हम मरने के लिए तैयार है, आप इस देश को आगे ले जाइए, और हमारा देश आजाद हुआ था। बस उसी प्रकार MIT के स्टूडेंट हो, अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अलग अलग गांव के स्टूडेंट हो, अलग अलग शहर के नौजवान हो, उनको सोचना पड़ेगा कि नहीं, मुझे मेरे देश को बेहतरीन बनाना है, मुझे मेरे देश से रोजगार, जो बेरोजगार है उसको खत्म करना है। जिस तरह से अगर हम सोचते हैं कि हमें आतंकवाद खत्म करना है, तो उसी प्रकार हमें बेरोजगारी खत्म करनी पड़ेगी, उस पर भी हमें संकल्प लेने पड़ेंगे। और वो संकल्प सिर्फ राजनेता के जरिए या सरकार के जरिए नहीं, लेकिन हमारी ब्लूप्रिंट के जरिए, हमारी सोच के जरिए, हमारी पढ़ाई के जरिए सब कुछ हो सकता है। तो MIT के इस बेहतरीन कार्यक्रम में मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से राहुल जी का, विश्वनाथ सर जी का, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हर साल जो छात्र संसद का कार्यक्रम करते हैं, वहां आकर नौजवान बात करता है, अपने अपने विचार रखता है, हजारों स्टूडेंट उसको सुनते हैं। काफी प्रगति इसमें हो सकती है, काफी क्रांति आ सकती है, और इस देश में अगर क्रांति कोई ला सकता है, वो तो नौजवान स्टूडेंट ला सकता है। और मुझे भरोसा है ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम काफी विचारों को बदल भी सकते हैं, और हम काफी कुछ नया सीख भी सकते हैं, और आने वाले दिनों में हम काफी कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन मेरे सभी नौजवान और स्टूडेंटों से मेरी विनती है कि फिर से एक बार, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में नहीं, हम भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत अफगानिस्तान, भारत श्रीलंका के बीच में नहीं, हमारी लड़ाई वो स्पष्ट होनी चाहिए कि 135 करोड़ भारतीय सुखी और समृद्ध कैसे बन सके, हम राजनीति में आकर ये काम कैसे कर सके, उस पर भी हम चिंता करें। और हमारी लड़ाई किसी और देशों के सामने नहीं, लेकिन चीन और अमेरिका जैसे बाहुल्य और हिम्मतवान देशों की बराबरी में हम लड़ाई करें कि हमें उससे भी अच्छा बनना है, पाकिस्तान से अच्छा हमें नहीं बनना, हम उससे तो बहुत ही अच्छे हैं, हम उससे बहुत आगे हैं, हम चीन से आगे कैसे निकल पाए, हम अमेरिका से आगे कैसे निकल पाए, उस पर भी काम करना चाहिए। मैं आपके इस माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि आप बाहर जाके मत पढ़िए, यहाँ पढ़िए, यहाँ बेहतरीन पढ़ाई हो सकती है। आप थोड़ी चिंता कीजिए, आप आप एक विश्लेषण लाकर रखिए देश के सामने, देश के राजनेताओं के सामने। बाहर पढ़ाई करने से बाहर के देश मजबूत हो रहा है, हमारा देश कमजोर हो रहा है। आप इस देश में पढ़िए, इसी देश में रोजगार करिए, इसी देश में राजनीति करिए, तो बहुत कुछ हो सकता है। सरकार आएगी जाएगी, लेकिन नौजवान अपने विचार और अपने सूझबूझ के साथ कुछ नया करके जाएगा, तो आने वाली 50 पीढ़ी तक उसको याद रखा जाएगा और कुछ नया हो सकता है। बस आपके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता था। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं काफी कुछ नहीं कह पाया आप लोगों से, लेकिन बहुत जल्द हम आप लोगों के बीच में भी आएंगे और अपने विचार रखेंगे। नौजवान के रूप में सहयोग कीजिए, नौजवान बोलेगा, दौड़ेगा और लड़ेगा भी। I think, Madam Pai, I will just take a minute. I just Yes, sir, over to you. I remember हार्दिक जी का आना हुआ था यहाँ पे भारतीय छात्र संसद में, और आज फिर से एक बार उन्होंने उनको लाइफ में एक धागा मिला। मैं ये बहुत अच्छा एग्जांपल है नई बैच के सामने, और जितने भी मुझे पता चला 500,000 लोग अभी सुन रहे हैं ऑनलाइन इस माध्यम से। बट ही गॉट दैट थ्रेड इन हिज लाइफ, एंड वो धागा उनकी लाइफ में मिला, और उनकी लीडरशिप इतने आम परिवार से आके आज जिस पद पे वो आज कांग्रेस पार्टी ने उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गुजरात में, उन्होंने उनकी भावना बहुत ट्रांसपेरेंटली, मतलब कोई पार्टी का विचार नहीं, बट देश और देश का युवा, एक गवर्नमेंट, और इससे सबसे उठकर उन्होंने की। तो इसलिए मैं हार्दिक जी आपका अभिनंदन करता हूँ कि ये विचार, मैं समझता हूँ कि कई बार हम पार्टियों से जुड़ जाते हैं, बट कई बार देश सर्वोपरि है, ये हमें, और हमको हमारी पार्टी के प्रति तो हमारा रिस्पेक्ट होना ही चाहिए अपने आइडियोलॉजी के प्रति। बट मैं आपको अभिनंदन करता हूँ आपके पॉलिटिकल करियर के लिए कि आने वाले समय में यही ट्रांसपेरेंसी और कमिटमेंट से अगले 10-20 साल में आप पॉलिटिकल काफी सारे पद हासिल करेंगे, काफी सारी और भी सक्सेस आप पाएंगे। बट आपका विचार जो होगा वो सदैव उसी तरीके से एक ट्रांसपेरेंटली और एक अच्छे भाव से, सद्भाव से आप काम करेंगे। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आपने यहाँ पे स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग की बात और इन सब चीजों को एक तरीके से जो पॉजिटिव तरीके से इसको देखा है, तो आप वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट है, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर है इसके कांग्रेस पार्टी के। तो मैं आपको न्योता देता हूँ कि आपके कांग्रेस पार्टी के जो वर्किंग कमेटी के जो 200-250 मेंबर्स होंगे, उनको हम यहाँ पे मैं ट्रेनिंग, एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग 4-5 दिन का, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे
निमंत्रण देता हूं। मैं भी जी ये जी पैंडेमिक खत्म थैंक होने यू के बाद उसके बिल्कुल बारे में आप सोच सकते हैं। और आने वाले समय में ऐसा भी एक प्लेटफॉर्म आपने तो काफी युवकों को प्रेरणा दी है गुजरात में, और एक गुजरात छात्र संसद की तरह एक ऐसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म, और स्वामी विवेकानंद जयंती के ऊपर 12 जनवरी को अगर उसका आप ऐसा अगले, तो मैं उसमें और हमारी संस्था इसमें आपको जो भी गाइडेंस या जो भी इनपुट चाहिए होगा वो हम देने के लिए तैयार है। बट यू मस्ट थिंक बिल्कुल बिल्कुल पार्टी से भी उठकर कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां उस मंच पे आए, सभी विचारधाराओं के लोग उस पे आए, तो ऐसा एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म आप कांग्रेस पार्टी का तो आपका एक अभी वो दायित्व है, वो तो आपने स्वीकारा है, बट बहुत अच्छा काम वहां पे खड़ा हो सकता है, ऐसी मेरी भावना यहाँ पे व्यक्त करता हूँ और मेरी जी शुभकामनाएं, और मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद हार्दिक पटेल जी, इधर आने के लिए और हमारे स्टूडेंट से संवाद करने के लिए और आपके ऊंचे विचार प्रकट करने के लिए धन्यवाद। I once again thank you from the bottom of my heart and on behalf of the whole MIT-WPU family and School of Government. Now, may I request Group Captain DP Abdul sir? No, our beloved founder, Revered Dr. Karar sir, wished to speak. I was just got to know. Can you just, Karar sir, Yes. can you speak your mind? Over to you. बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक जी। जी बहुत अच्छा लगा आपके विचार, आपकी सोच, the courage, conviction and determination which you have in your mind for the nation building, our mother India. बहुत अच्छी बड़ी सोच है। Going beyond politics, going beyond our personal agenda. जी India needs people like you. Your journey I have seen, I have observed, but the way in which you expressed today and spoke ultimately, finally making Mother India as a Vishwaguru, ये सोच भी ऐसे उम्र में आना बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सुन रहा था मैं। अभी बात ऐसी है कि दुनिया में ये पेंडेमिक के कारण दुनिया क्या फेस कर रही है, चाइना, अमेरिका जो सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स बने हैं, कहाँ है पता नहीं, किसकी सिक्योरिटी चल रही है, किसकी सिक्योरिटी की बात करते हैं। लेकिन ये मैड रेस जो चल रहा है दुनिया में, रैट रेस है, मैड रेस है, पावर गेम है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। पार्टी कौन सी है, कांग्रेस है, बीजेपी और कुछ है, वो बात छोड़ो, लेकिन एक भारत का एक नौजवान अपनी भारत माता के बारे में उसको विश्व गुरु बनाने की बात करता है, और वो विश्व गुरु बनाने के लिए कौन सी दिशा चाहिए, कौन सा पाथवे चाहिए, व्हाट इज द पाथवे फॉर मेकिंग दिस मदर इंडिया विश्व गुरु and show the pathway of peace and harmony to the mankind. बड़ी अच्छी सोच है, मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल। I think you should have a group of people like these from different parties, and as you said, that if they can meet and come together, going beyond politics, going beyond the party politics, keeping the purpose before the personality. Purpose सबसे ऊंचा होता है, आदर्श होता है जब सामने दिमाग के, तो शायद then personal agenda goes down. And you know that MIT has been always talking about development of a winning personality. मुझे ऐसे लगा कि अपने मन या दिल से जो भी बात करता है ट्रांसपेरेंट होता है। प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ थॉट एंड प्यूरिटी इन एक्शन, ये तीनों का एक मेल मुझे ऐसे लगा कि हार्दिक पांड्या साहब ने जो कहा, पटेल ने, उसमें बड़ा साफ दिल था, बहुत सीधा क्लियर एजेंडा है, दिमाग में एक सोच है, विचार है। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए एक अच्छे भविष्य की बात है। मेकिंग मदर इंडिया विश्व गुरु, ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है। मैं तो हमेशा ये वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, हम तो बात करते हैं संत ज्ञानेश्वर टू अल्बर्ट आइंस्टाइन। जब तुमको संत ज्ञानेश्वर हो या आइंस्टाइन हो, ये बड़ा जर्नी है, ये सोचने का वक्त आ गया है।
ये जो सिचुएशन है अभी, उसके बारे में भी हमारी नई पीढ़ी जो है जब समझ जाएगी शायद, जैसे हार्दिक साहब ने जो कहा, बड़ी छोटी उम्र में बड़ी सोच है, बड़ी सोच विचार है। मैं धन्यवाद देता हूँ। शायद हमारा हार्दिक जी अपने माता पिता को मेरा प्रणाम बोल देना। थैंक यू। यस सर, धन्यवाद, थैंक धन्यवाद। On that note, may I now invite Group Captain DP Apte, Pro-Vice Chancellor of MIT-WPU University, Pune, to propose the vote of thanks for the function. Sir, over to you. Thank you very much. It is indeed my honor to propose a vote of thanks. It is the 16th batch MPG, that is Master's Program in Political Leadership and Government. And this program's inauguration, that is a commencement, has happened in such a good note that in fact all these students, those who will be joining the 16th batch, they would have, I'm sure that this particular mark is set so high on the first lectures itself. I call it as the lectures. It's not only inauguration session. That now all the future people, those who are going to come and teach, there is a high mark has been created, and they have to actually live up to that. It started with our chief guest, Governor of Himachal Pradesh, Honorable Shri Bandaru Dattatreya. He talked about a right way, how we should function and people should do. He talked about peace. He talked about a brotherhood and unity, diversity. And although we have got a different states, and the states have got their own prosperity, they have to go ahead, but at the same time, they should also think about nation. And all states also should come together. When he was talking about binding all these thoughts from different states. After his very interesting initial speech, opening speech, as he had to leave early, after that we had three good speakers. I won't call them only the politicians and leaders, but I will call them as they spoke like expert teachers and motivators for the students. And they have taken a complete academic level. They are gone. They are not talked about any one word about politics of their party politics. And it is a completely neutral platform. Not a single word. They actually run this presentations, and you'll see that they are not talking about party politics. And they have picked up the three very, very important aspects of what our nation is facing. Well, of course, the first with Mr. Dinesh Gundu, he took the completely different topic. And normally this topic is only talked in science and other areas, but the politicians talking and so sensitive about this was very important. And he talked about conviction in the party. He says any party you can join, but you should have conviction. He said that you should have commitment and dedication. And he talked about the politicians to do their best. Forget about becoming a better, but do your best. And that's why all other people, managers, and they all talk about do your best. So now here he is not talking about doing your best. He was talking about and not becoming a better or becoming a richer or becoming a leader. He was not talking about that. He said that will incidentally come. And that's what it actually is a good advice to them. Then Mr. Ritesh Pandey he spoke about, and he spoke about the burning topic of future, not today. Today although people talk about climate change and what we are doing it for the climate change, but he opened it such a way that I am sure that all our future political leaders, those who are going to come from here and they come out in that, they will think about it, because that will be the problem they will be facing when they will be very senior political leaders. And he talked about stark realities of life, what is going to happen. And he talked about role of politicians in getting this for future generation. It's not only people of science or people of industry, but the politicians can only bring this change. And he talked about that interdisciplinary approach for this. It's not a one-way traffic. And the last speaker was really a motivational speaker, I can say.
that is Mr. Hardik Patel ji. Your motivational speaker, the way you talked about, and Professor Dr. Vishwanath Karada actually came again and talked about this, that your thoughts of about this, you talked about a solution and not a problems. You talk about not just resisting something for the sake of it, but actually finding the solution. He talked about a brain drain, education, and employment. That's the two things he talked about. Educate the people and provide them employment. And this is really a mesmerizing talk. And he talked about a blueprint of progress. So all these new batch students start making a blueprint of the progress which he talked about. Thank you very much. All these three great speakers, they are really motivated our students who are joining a new batch. I also would like to thank Amit Kumar, our alumni of 11th batch. He has given a grassroots examples how he has done it in the last 5 years, about 5-6 years. And he talked about it was a motivation for our students to do well. Now, I also take this opportunity to propose a vote of thanks to our revered, beloved Professor Dr. Vishwanath Karad, founder and chief patron of MICE group, and also president of MIT World Peace University. And he has created a huge platform for all of us over so many years of toil and work, that now it is up to the new generation and up to us to use that platform for going further out. Thank you very much, sir, for creating this platform for everyone here. And I also thank Mr. Rahul Karad, Managing Trustee, Executive President of MICE, and Executive President of our World Peace University, for getting into the new areas, because we are known for engineering and management and that kind of education earlier in India. And Mr. Rahul Karad has found a new path, which is a requirement of the future, that is the politicians and political leadership, and youth leadership. So he has got into this and started MIT School of Government, and now this is the 16th batch. I've been there right from the first batch onwards with this batch. And initially the people were laughing at it, and they were saying how it will be successful. But we have seen that so many alumni have gone, and today we will not probably come to know the importance of that. We'll come to know the importance after 20, 30, 40 years, when these students will be ministers, these students will be chief ministers and prime minister. And all that, whatever learned from here, will go with them. They will be educated. And we have seen the 3 speeches today itself. That itself is clear, that whatever the students are joining here, irrespective of your party, it should be for the nation, development, building nation, and leading our India to become a world guru and Vishwa Guru, and that kind of thing you should work irrespective of parties. Parties have got their own philosophies, but all philosophies will converge at one point, and that's our nation building. So thank you very much, Rahul sir, for getting this platform. I also thank our Vice Chancellor, Professor N.T. Rao. He will be always available for you for guidance for your next stay of 2 years here. And of course, our entire MIT-SOG staff and MIT World Peace University staff and faculty. We welcome you with open heart. Dr. Haridas will be there to guide you day-to-day affairs, but all other MIT World Peace University staff and teachers and faculty and staff will be with you. So welcome, and it is a new journey you're starting, and you'll remember this journey probably maybe times to come in the future. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. Now we are ending. I request my technical team to relay the national song with which we'll end our ceremony. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Shitalam,
शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। ये दूसरी चीजें है अभी इसमें Thank you, everyone. With the national song, I declare, with the permission of everyone, that this ceremony is concluded. Thank you, everyone who joined us today, all the chief guests, our revered founder, Professor Dr. Vishwanath Karad, our executive president, Dr. Shri Rahul V. Karad, and all our beloved vice chancellor, Dr. N.T. Rao sir, all other vice chancellors, deans, and head of schools, and all those who are watching us live. Thank you so much, and have a very good evening ahead. Thank you.